Good evening, students. Krishna are back with a new important question for you. Let's see. What is the question? As I have given, the name of the topic is tricky problem in kinematics. भाई ट्रिकी प्रॉब्लम क्या होता है? इसमें कुछ ट्रिक्स इन्वॉल्व रहते हैं, पर ट्विस्ट रहता है क्वेश्चन में। बहुत डिफिकल्ट लगता है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, इस टाइप का। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन है क्या। बिफोर दैट आप लोगों को सब मेरा क्रेडेंशियल्स मालूम होंगे। so many times you must have seen. so क्वेश्चन ये है, एक व्हीकल है जो कि एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड in नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये नॉर्थ, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब it will make 45 with east and 45 with north. ओके, इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। क्या स्पीड है उसका? 5 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील ऑफ द व्हीकल एंड द सरफेस इज म्यू इज इक्वल टू 0.2। ये जो म्यू है 0.2 है। So what is the minimum time required? ये देखो, what is the minimum time required for the vehicle to change its velocity towards southeast? और नॉर्थ ईस्ट को जा रहा है, उसको साउथ ईस्ट में चेंज करना, तो इस डायरेक्शन में आने का है, वो भी 45 होना चाहिए। ये एंगल भी 45 होना। साउथ and this is east, this is south. So making angle 45 degree with east as well as south, that is known as southeast. ये आपका फाइनल वेलोसिटी है, बस उसका मैग्नीट्यूड सेम 5 मीटर पर सेकेंड है। ये मैंने लिख दिया। व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द व्हीकल टू चेंज इट्स वेलोसिटी टुवर्ड साउथ ईस्ट, so that the final speed is also 5 मीटर पर सेकेंड। जो इनिशियल स्पीड नॉर्थ ईस्ट में 5 मीटर पर सेकेंड, सेम स्पीड मेंटेन होगा साउथ ईस्ट में 5 मीटर पर सेकेंड। तो उसके लिए मिनिमम स्पीड, मिनिमम टाइम क्या हो? एंड वो तो है, लेकिन जिस पाथ में वो मूव करेगा बाय चेंजिंग द वेलोसिटी डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट, जिस पाथ में वो मूव करेगा उस टाइम तो लगेगा ना। उस टाइम में जो पाथ में मूव करेगा वो पाथ का ज्योमेट्री क्या है? सर्कल है, एलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है और स्ट्रेट लाइन है। पर आप पता है स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो सकता, लेकिन कोई भी एक ग्राफ हो सकता है, या फिर कोई स्टैंडर्ड ग्राफ ना भी हो। वो पूछ रहा हो ज्योमेट्री क्या है वो पाथ का ड्यूरिंग दिस मिनिमम टाइम, फॉर दिस मिनिमम टाइम ड्यूरिंग द चेंज ऑफ वेलोसिटी डायरेक्शन। तो मैंने ये तो ड्रॉ कर दिया। ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, विच इज टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। सो तो कितना चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ बाबू? v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। ये माइनस v1 वेक्टर हो गया, देखो ये। तो v2 प्लस माइनस v1 इज दिस v2 माइनस v1 वेक्टर। उसको डेल्टा भी बोलेंगे, ऑफकोर्स चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलेंगे। उसका डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड साउथ होगा। वेरी सिंपल वेलोसिटी सब्ट्रैक्शन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। और इसका मैग्नीट्यूड होगा 5 इंटू रूट 2। ये 5 है, तो ये 5 रूट 2 होगा। ठीक है ना? तो मैंने सीधा लिख दिया डेल्टा वी मैग्नीट्यूड इज 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, बट टुवर्ड साउथ। वेरी सिंपल। नाउ हम आते हैं बेसिक कंसिडरेशन से। We know that delta v, the change of velocity vector, is equal to average acceleration into delta t, है ना? इक्वेशन 1। ये जो सिंबल है लेस देन ग्रेटर देन, ये है एवरेज सिंबल, एरिथमेटिक एवरेज सिंबल। सो ए बार एवरेज इज द एवरेज एक्सीलरेशन वेक्टर।
ये वाला जो ये एवरेज एक्सीलरेशन वेक्टर. As per this equation 1, delta t the scalar, so the vector delta v and vector average acceleration both should have same direction. If a bar is b bar into a scalar, then a cap should be b cap. So the direction of delta v must be direction of average acceleration. ये जो सिंबल क्या है, यूनिट वेक्टर का सिंबल, डायरेक्शन वेक्टर इसको बोला जाता है. तो उसको हम अगर वेक्टर फॉर्म निकाल देंगे तो डेल्टा टी क्या होगा, ये दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो निकाल दो दोनों का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर, सो रहेगा. तो डेल्टा टी होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन डेल्टा टी डेल्टा वी मैग्नीट्यूड बाय ए मैग्नीट्यूड. यस और नो? Am I clear? So and delta v is 5√2 meter per second. डायग्राम मैंने दिखाया आपको. So delta v is the magnitude of delta v vector and a bar, this less than greater than this symbol a bar, that is this a average is the magnitude of a average vector. Okay, and delta v कितना है magnitude में 5√2. ठीक है. टू मिनिमाइज डेल्टा टी, इसको मिनिमाइज करने के लिए डेल्टा वी तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आई ऑलरेडी नो इट इज 5/2. सो इसी को मैं मैक्सिमाइज करूंगा. किसको मैक्सिमाइज करूंगा? तो एवरेज एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है it must be maximum possible so that delta t will be minimized. He is asking, the question is just see what is question is find the minimum time required. So t mean, delta t mean required for the vehicle to change its velocity towards southeast from original direction of northeast. Okay, so इसको मैं ए एवरेज को मैक्सिमाइज करूंगा. ओके, तो व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सीलरेशन पॉसिबल फॉर द व्हीकल? दैट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स ओनली in the horizontal plane. What is the maximum acceleration? Maximum friction force by mass. Maximum friction force is F max by m, means mu mg by m. So mu g is the maximum acceleration of the vehicle in that horizontal plane. अभी आप देखो at different point में of the path different acceleration हो सकता है, maximum हो ना हो, लेकिन डिफरेंट एक्सीलरेशन हो सकता है ना. बट अगर ए एवरेज को मैं मैक्सिमाइज करूंगा देन एक्सीलरेशन एट एवरी पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू ए मैक्स एंड पैरेलल टू ईच अदर. तो अगर एवरी पॉइंट में एक्सीलरेशन ए मैक्स रहेगा एंड ऑल पॉइंट्स एक्सीलरेशन पैरेलल टू ईच अदर, सो एवरेज भी हो जाएगा ए मैक्स, है ना. वही लिख दिया मैंने. If at any point the acceleration a bar is different in direction than other a bar directions, the magnitude of a bar average, the average acceleration का जो magnitude will be smaller in the delta v direction. ठीक है ना. अगर एक acceleration from different direction है, उसका component ही रहेगा ना फिर along other acceleration direction, so average acceleration in the delta v direction will become less. So since it will not be maximum, then delta t will not be minimum. That's what I wrote. So delta t will not be minimum in that case. So we conclude that for the delta t to be minimum, a acceleration average vector must be equal to a max vector, and for that to happen, a bar magnitude at every point must be equal to a max and a bar vector must be equal to a average vector. अगर every point में it is a max a acceleration and they are parallel to each other, then a bar average will be a bar at any point, and then I make a bar magnitude a max, so mu g. So what is a average? Mu g. This is for which curve? For delta t to be minimum. A bar
average must be equal to a max. Okay, but a bar must be equal to a max means a bar at every point must be equal to a max, so that उसका average भी होगा a max is equal to mu g, है ना. So a bar magnitude ये जो a bar average का जो magnitude should be mu g for a delta t to be minimum. Okay. सो मेरे को डेल्टा टी मिनिमम करने के लिए ए बार ए जो ए एवरेज का मैग्नीट्यूड को मैक्सिमाइज करना है. ए एवरेज magnitude should be a max, and because every point acceleration should be a max, so that a bar max, so मैं लिख देता हूं ये जो max है should be a max. Okay, so then I'll say a bar max एवरेज जो एक्सीलरेशन है उसका मैक्सिमम जो पॉसिबल है दैट शुड बी इक्वल टू ए मैक्स. सो ए बार जो एवरी पॉइंट जो एक्सीलरेशन उसका मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू इस मैक्सिमम पॉसिबल म्यू जी, एंड ए बार must be equal to a average bar. Okay, and that means a average max magnitude should be mu g. So delta v 5√2 towards south, so delta a bar, sorry, the a bar average must be towards south. Yes or no? So a bar at each point must be towards south. That should be mu g for delta t to be minimum. So delta t minimum will be delta v by a average max. That is a average max will be a max. So 5√2 by mu g, 5√2 by 0.2 into g 10. So 5 by √2 second. This is the minimum time. सो अभी ये पाथ क्या होगा भाई, सर्कल होगा क्या. सिंस ए बार इज कांस्टेंट फॉर डेल्टा टी मिनिमम फॉर मिनिमम टाइम, फॉर डेल्टा टी टू बी मिनिमम, सिंस ए बार इज कांस्टेंट and v bar is not parallel to a bar, because just see what is the v bar initially in this direction, but what is the a max, what is the a acceleration in south direction, that is the a bar is constant. Okay, which direction? That is a average direction, which is south direction, and all age must be south direction, so that, and maximum value, so that a average max should be also south direction maximum. So that's why, since a bar is constant, acceleration constant, but v is not parallel, accelerates to the south, and v initially south is say oblique projection sort of thing. It's like g downward and v is making 45-degree angle with the horizontal. It's something like this. So the path must be a parabola. So question number 2 answer. It's just like a projectile motion in 2 dimensions. So note, इसलिए note करो, while the vehicle is changing its direction, direction of motion. When the velocity is changing its direction of motion, its velocity does not remain at constant magnitude, just like parabolic path. When it's changing its direction of motion, its velocity is also changing its magnitude. It doesn't remain constant at 5 meters per second. After the change of direction motion is over, in this example given, after the change of direction of motion is completed, its magnitude again becomes 5 meters per second. During the change in direction of motion, it moves in a 2D projectile motion. Yes or no? So कितना सिंपल क्वेश्चन था. वो डेल्टा टी मिनिमम जब है उसी के लिए ये all the discussions is relevant for minimum delta t. Okay, so for minimum delta t, the
There are two questions is asking. What is the value of the minimum delta t? Okay. And how much we found the minimum delta t? Delta v by A average max. A average max is A max. So 5 root 2 is the delta v, mu g is the A max. So yeah, 5 by root 2. Okay. So 5 by root 2 कितना होता है? 5 by root 2, it will be something like 3.5 second. है ना? Okay, just to calculate yourself. And what is the path during that change of velocity from southeast to northeast to southeast? During that, it must be a parabolic path. For which case? For satisfying minimum delta t. Then the path has to be a parabola. Very nice. So all of you understood this? Such a good question, such a simple question. Just I wanted to draw your attention that some questions can be asked in such a manner that it corresponds to our maybe it corresponds to the projectile motion, but without explicitly saying so. So in your mind may you should be in a position to correlate. So this correlation comes when you give more and more thoughts. Just don't go for formula mug up. Don't mug up the formula only. Formula should remember, but don't learn physics by just mugging up formula. Try to understand, try to analyze, try to correlate different topics. Then you can answer. Try to develop this habit so that you gain a lot in coming days. So all the best for you for your upcoming examinations, and again and regularly come to see my videos. Subscribe if you are not so far. If you are not subscribed so far, please subscribe so that we get to know when the new videos are being uploaded. Okay, so and try to go through my discussions again and again. If I have not understood properly, or worst case, if I have not understood, if you want to get some clarification from me, contact me. Thank you all. Have a good day.